Hello everyone, welcome to Aptiplus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the weekly current affairs from your August 8th to August 14th. So let's begin with the first topic. So the first topic is related to the challenges confronting the election commission. So let's take them one by one. So first is the allegations of the electoral roll manipulation. So we all know that recently the opposition leader, that is Rahul Gandhi, he accused the EC of manipulating the voter rolls. ठीक है, तो वो चाहे कर्नाटका हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इन दी स्टेट्स देयर वर एलिगेशंस ऑफ डुप्लीकेट एंट्रीज और इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क रजिस्ट्रेशंस. ठीक है, and there were also claims of favoring certain political parties, and this has put the election commission under political scrutiny. So this is the first one. The second one is related to the recent SIR controversy. Okay, the Bihar SIR, that is the special intensive revision, which was ordered in June. Now the first point of contention there is that the exercise is being conducted just 5 months before the assembly elections, so that puts up a question mark. Second, what is the aim of this SIR? So it basically aims at clearing up the voter list by requiring certain proofs like the proof of date or the place of birth for the voters and their parents. ठीक है, अगर आप 1987 के बाद आपका जन्म हुआ है, so these kind of documents are required. And recently a draft was released on the 1st of August, and it showed that 65 lakh voters were missing from the previous say there were around 8 crore voters. Out of those 65 lakh voters were missing. And what were the reasons cited by EC? The election commission said that there was, say, death is one factor, duplicate registrations, migration, or there are certain cases of untraceability as well. So the various sections of the society, like the civil society organizations, NGOs, opposition, they have challenged this SIR in the Supreme Court as well. And the Supreme Court, in its interim order, it has mandated the booth wise publication as well as, say, inclusion of Aadhaar as a, you can say, proof of document. So this is the second, that is the SIR controversy. Now coming to the third, that is related to political and judicial pressure. ठीक है, तो here we all know that how time and again the opposition, they are conducting various kind of protests, marches, parliamentary disruptions because of these challenges associated with the election commission. And even the Supreme Court, the election commission is under the scrutiny of the Supreme Court for all these factors, right? Now the next one is your challenges for migrant voters. Okay, so what are the challenges here? So the migrants, they still must vote at their registered location, which there are number of challenges here. It puts financial burden, it puts logistical burden, and it can also depress the voter turnout. ठीक है, अगर आप कोई स्टेट है जैसे बिहार, सो बिहार इज इकोनॉमिकली अ वीक स्टेट, सो दिस कैन डिप्रेस द वोटर टर्नआउट इन अ स्टेट लाइक बिहार. ठीक है, एंड देर इज ऑल्सो लैक ऑफ चीप सिक्योर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस फॉर मोबाइल वोटर्स, एंड दिस रिमेन्स अ सिस्टमिक इशू. ठीक है, सो द इम्पैक्ट ऑन माइग्रेंट वोटर्स. Then there is also systemic challenges. ठीक है, systemic challenges include like balancing the accuracy of the electoral rolls with timely elections. This is one kind of challenge. Secondly, ensuring of transparency and at the same time safeguarding the cyber security. ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा the EC refused to provide machine readable voter list, right? So then there are another challenge is that how to handle large scale voter verification. अब जिन states में there is high migration and the record keeping is poor in nature, so these kind of challenges are there. Now another is the appointment and autonomy concerns.
तो 2023 एक्ट के अंडर द ईसी हैज़ टू बी सिलेक्टेड बाय अ 3-member पैनल. तो उस 3-member पैनल में वी हैव द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वन इज़ द प्राइम मिनिस्टर, सेकंड इज़ योर यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, एक यूनियन मिनिस्टर, थर्ड योर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, द एलओपी, ठीक है. नाउ द व्हाट इज दिस इज गवर्नमेंट, ठीक है. सो 2 इज गवर्नमेंट, 1 इज द ऑपोजिशन. सो 2:1 शोज द गवर्नमेंट डोमिनेंस. तो ऑपोजिशन कहता है कि आपके अपॉइंटमेंट में ऑब्वियसली ऑलवेज द गवर्नमेंट विल डोमिनेट, ठीक है. तो दिस विल लिमिट द डिसेंट, राइट. सो देर इज़ अ बायसनेस, ठीक है. तो वो चीज़ है. तो दिस अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो अंडर चैलेंज. तो इन एसेंस वी कैन से दैट द ईसी इज एट दिस मोमेंट बेसिकली फेसिंग अ credibility crisis, and the factors as we have discussed, the manipulation of the voter rolls, be it the SIR, be it the challenges in migration voting, and then the appointment process also, right. Also, what is ultimately getting affected? The free and fair elections, which is the one of the pillars of our democracy, right. Let's move to the second topic now. Now, yes, the second topic is related to the new income tax bill, right. So basically what is the purpose of this? The purpose is the replacement of the 60 years old income tax act of 1961, and the aim here is to simplify the act, okay. Basically remove the archaic provisions which have become outdated, and to simplify the language so that it is becomes easier for the common man to understand, then to make the compliance easier also. And it is likely to be effective from April 1 of 2026, right. So if I discuss regarding the to make in the act more crisper, so the number of sections have been reduced, the chapters have been reduced, and the number of words also have been reduced. So it was the first draft was basically came in your fab in the during the budget days, and the revised this particular revised version, this now incorporates the recommendations of the parliament select committee, ठीक है. तो उस चीज़ के लिए recently the old bill was it was taken back, and this new bill has been introduced. Now let's discuss some of the key features and the changes. So number one is related to the return filing and refunds, ठीक है, refund filing and refunds. Now there are certain clauses which have been removed, which restricted the refunds to only on time filed returns, ठीक है. Now the refunds can now also be claimed for belatedly filed returns. तो पहले क्या था, ऑन टाइम होना चाहिए था, अब जो लेट कर रहे हैं उसमें भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो. एंड देर इज़ नाउ नील TCS ऑन LRS remittances for education purposes. So these are some of the provisions related to return filing and refunds. Second is related to corporate taxation. तो अब कॉर्पोरेट टैक्सेशन में क्या हुआ है? नाउ द इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिडक्शन एरर्स दे हैव बीन करेक्टिव. The alternate minimum tax for LLPs, so that has been aligned with the existing provisions. The nil TDS certificates have been allowed for taxpayers with no income tax liability. So these are some of the factual details that you should know, and these can be asked as it is in your prelims exam as well. Also in the mains exam, a analytical type of question can come. So this you have to remember. You have to remember the facts. Then digital and virtual space provisions. So this particular bill, it retains virtual digital space definition. So what is that? It allows the authorities to access the email, social media, online investment accounts, etc. क्लाउड सर्वर एप्स, ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं. SOPs will be issued for handling the personal digital data during the surveys and the searches, ठीक है. So this is related to digital space and compliance. Then so there is also exemption for the Saudi Public Investment Fund. So income from the investments in
India, now they are fully exempt. Now it also extends the NPS benefits to the guaranteed unified pension scheme. So up to 60% of the withdrawal tax free is now available at the time of retirement. So this is related to the taxation law amendments of 2025. ठीक है. So basically these are some of the totally factual details of the new income tax bill, and the only purpose is to make the law more leaner, more easier to understand, and more implementable, right? Next topic, we have the two bills, that is the national sports governance and the anti-doping bills. So let's take them one by one. So this particular National Sports Governance Bill 2025, so it aims basically to regulate the national sports federations, ठीक है, जो आपकी sports federations है at the national level, and to ensure they are in alignment. So this is important, that they should be in alignment with the charter of your Olympics as well as the Paralympics. ठीक है. तो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली दैट द इंडियन टीम, ठीक है, वी आर हैविंग अ टसल विद अ कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान. ठीक है. सो वी आर नॉट इंडल्जिंग इन एनी स्पोर्ट्स इवेंट्स विद देम, bilateral sports events. So similar kind of argument has been presented by the BCCI, that there is no chance that India will be having certain bilateral sports events with Pakistan. But in case of international events, like we have your Asia Cup, like we have your Olympics, okay, so to have alignment with the charter of these games, we have to allow the team to participate, say, in the Asia Cup. So this is the argument that has been presented. So there are critics as well as there are supporters also of this particular argument. So one is this. Second, it establishes national sports board. ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड करेंगे. तो दिस पर्टिकुलर नेशनल स्पोर्ट बोर्ड, इट कैन डी रिकॉग्नाइज द फेडरेशंस. ठीक है, अगर किसी फेडरेशन में देर इज़ ग्रोस इरेगुलरिटी, इलेक्शन में है, पब्लिक फंड का मिसयूज़ हो रहा है, और दे आर नॉट होल्डिंग द इलेक्शंस प्रॉपरली, सो दैट पर्टिकुलर द NSB कैन डी रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर फेडरेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वुड बी अ नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल. तो अब नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, इट विल हैव पावर्स इक्वलेंट टू दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट. ठीक है, तो वो कोई भी डिस्प्यूट हो रिगार्डिंग से एथलीट सेलेक्शन, कि आपने एक प्लेयर को क्यों सेलेक्ट किया है, या कोई इलेक्शन से रिलेटेड, तो इस तरीके के कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे, सो दे विल बी रिजॉल्व्ड इन दिस नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, एंड द डिसीजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल, दे कैन बी चैलेंज्ड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर ट्रांसपेरेंसी. तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू गवर्नेंस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड RTI, तो यहाँ पे RTI will only be applicable to federations which are receiving government funds. तो ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि इसकी वजह से द BCCI, दैट बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ये बाहर हो जाता है इस बिल के दायरे से. So this BCCI, it gets excluded, and a question can come on this also, analytical question. ठीक है. सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट देर इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन फॉर पब्लिकेशन ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स एज वेल एज proper fund utilization, adherence to proper fund utilization. So that is also a point related to transparency. Now third, if I talk about athletic empowerment, ठीक है, एथलीट के एम्पावरमेंट के लिए क्या प्रोविजंस हैं. सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर बिल, इट प्रमोट्स जेंडर पैरिटी, सो इट ensures there is fair play and accountability. Also it supports district and block level athletic development. ठीक है, एंड इट रिड्यूसेस द मैंडेटरी टेन्योर एलिजिबिलिटी फॉर NSF इलेक्शंस फ्रॉम 2 terms to 1 term. तो अब ऐसे में क्या होगा, जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, लाइक वी हैव योर PT उषा, सो दे कैन contest the elections. So and these are some of the provisions related to athlete empowerment. Then administrative changes. So the age limit for the administrators, it has been relaxed. So instead of 70, now we have 75 years
as the bar age gap, and this will only be valid if the international statutes allow this, right? So both the things, they should be in sync, national as well as international. Introduces the stringent system of accountability for misuse of fund and election irregularity. So this we have already discussed. Now if I talk about your नाडा अमेंडमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, द वी ऑल नो व्हाट इज नाडा, दैट इज द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. सो व्हाट इज द पॉलिटिकल एंड लीगल कंटेक्स्ट फॉर दिस? सो द ऑपोजिशन कंसर्न्स क्या है, दैट देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नेंस, वन. सेकेंड, लिमिटेड क्लैरिटी ऑन ग्रासरूट एथलेटिक डेवलपमेंट, ठीक है. थर्ड, जो हमने पॉइंट बोला था, बीसीसीआई हैज़ बीन एक्सक्लूडेड. फोर्थ, इसी से रिलेटेड एक चीज़ है, दैट सुप्रीम कोर्ट इट रिकग्नाइजेज बीसीसीआई एज अ पब्लिक फंक्शनरी, ठीक है. इट परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शंस, बट जो गवर्नमेंट का बिल है उसमें कुछ और बोला गया, ठीक है. सो दीज वर द टू एक्ट्स. वन इज़ नाडा, क्योंकि नाडा वाला आपका जो नाडा की ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए, एंड इट बिकम्स इन सिंक विद द प्रोविजंस ऑफ वाडा, दैट इज योर वर्ल्ड वाइड एंटी डोपिंग एजेंसी. एंड द सेकंड वन, द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल. So I have told you what is the concerns now and what are the significance of these two bills, and once they receive the presidential assent, they will become acts. So let's move to the next topic now. Now this is also a topic which was in the news, that is related to the stray dogs. So here let us first discuss. We all know what is the context, that recently a 6-year-old girl, she died from rabies in the Delhi NCR, which prompted the Supreme Court to take this suo motu action. So what did they say? That they directed the municipal authorities in the Delhi NCR region to pick up and house all the stray dogs, ठीक है, विद इन 8 weeks टाइम. तो आप सारे डॉग्स को उठाओ स्ट्रीट्स पे से एंड उनको डेडिकेटेड शेल्टर्स में डालो. सो what was the rationale by the Supreme Court? That we have to ensure that all the citizens, especially the children, they can move freely without any fear of these dogs, ठीक है. And now let's discuss the important aspects. Now what is the government policy on stray dogs? ठीक है, तो पहली चीज़ तो है जो आपका PCA एक्ट है, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएलिटी टू द एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960. तो ये प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स को from unnecessary suffering. Second is the ABC rules. Now what is this ABC rules? जो ABC rule are animal birth control rules. तो 2001 वाले जो rules थे, they mandated sterilization, immunization, ठीक है, with humane capture methods. तो ये था, and the dogs they were released back to their territory, ठीक है. तो जब उनको स्टेरिलाइज कर दिया, उनको आपने वैक्सीनेट कर दिया, तो उनको आप रिटर्न कर देते थे. एंड द मेथड्स लाइक यूथेनेशिया एक्सेट्रा, दे वर ओनली अलाउड फॉर डॉग्स विच वर रैबिड इन नेचर, और विच वर क्रिटिकली इल, और विच वर फैटली इंजर्ड. तो इनके अंडर आप डॉग्स को यूथेनेशिया भी प्रोवाइड कर सकते थे. अब 2023 में इसका अपडेट आया. what did it do? So this earlier rules, they were applicable for dogs. Now stray cats were also included in this, and a 3-tiered monitoring system was introduced. So instead of stray, ठीक है, stray बोलने से अच्छा एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज द कम्युनिटी एनिमल्स. तो इसमें क्या हुआ, इट अलाउड कम्युनिटी फीडिंग एज वेल, ठीक है. एंड इट मेंटेन्ड इन सिटू मैनेजमेंट टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट, कि जो भी आपने स्टेप्स उठाने हैं, तो आप जो डॉग्स हैं से दे आर रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, तो वहीं पे आप स्टेप्स उठाइए, ठीक है. सो
what is the official stance now on this? So the government repeatedly says that this ABC program is the only rational as well as the scientific solution to this problem of this stray population or rabies etc. तो गवर्नमेंट का ये स्टांस है. So this is the government policy that we have talked about now. Now let us come to the rulings of the various courts. ठीक है, अब कोर्ट ने क्या क्या रूलिंग्स दिए. नाउ in 2021 there was a ruling by the Delhi High Court. It said that the street dogs they have a right to food. ठीक है, and at the same time the citizens, that is the humans, they have a right to feed. ठीक है, so this was one. Second, the dogs are territorial and they must be cared for within their locality. तो सेम चीज़ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है. अब बात करें अगर ये तो दिल्ली हाई कोर्ट हो गया. केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा? केरला हाई कोर्ट सेज द लोकल अथॉरिटीज दे कैन नॉट किल द स्ट्रे डॉग्स एंड दे मस्ट फॉलो द ABC रूल्स. सो सिमिलर जो दिल्ली हाई कोर्ट वाला था, सिमिलर चीज़ उन्होंने बोली है. नाउ but there are other high courts as well, like we have the Bombay High Court, Himachal High Court, Karnataka High Court. They say that the authorities they have the discretionary power. अब अगर वो कलिंग करना चाहते हैं, वो मारना चाहते हैं डॉग्स को, दे कैन डू सो. जो भी उनके म्यूनिसिपल रेगुलेशंस हैं उनके अंडर अगर उनको पावर है, सो दे कैन डू सो अंडर दोज पावर्स, राइट. सो दीज वर द हाई कोर्ट रूलिंग्स. एंड if I talk about the Supreme Court rulings now in 2015 the Supreme Court said that the municipal authorities they have to comply with the act and the ABC rules. But 2022 में 2022 में the Supreme Court said that it is the moral responsibility of the citizens. ठीक है, कि आपको स्ट्रे फ्रेंडली होना चाहिए. तो अगेन प्रो दिस animal ruling you can say in 2025, and this Justice Pardiwala he criticized the mandatory return of the dogs to their territory. ठीक है, तो they said this is absurd given the public safety concerns. So you can see that different rulings are giving either pro animal or pro human safety rulings are there. Now what are the key tension areas here? What are the key tension areas? So one is that human safety versus animal welfare. Obviously this is the first, and the second is the community versus the centralized approach. What is community ruling? आपकी ABC rules क्या बोलते हैं? It is the responsibility of the citizens. And the centralized approach says, which the latest order of the Supreme Court is mentioning, that it pushes for the shelters, the municipal shelters, right. So this is now we are waiting. Recently the CGI also made a remark that he will again go through that order. So we are expecting कि कुछ changes हो सकते हैं. So you keep a tab on this, on the developments related to this. Next, Noida to become a metropolitan corporation. So this Supreme Court has made a suggestion to convert Noida to a metropolitan corporation. तो सबसे पहले what is the current status of Noida? So this Noida, it is being managed by the New Okhla Industrial Development Authority, that is the full form of Noida, and it was created in 1976 under your, let me mention, 1976 under the UP Industrial Development Act. So UP Industrial Development Act, इसके अंडर this particular body, it was authority body was established, and it is managing the currently the Noida. Functions, what are the functions of this? So this particular body, it handles both development as well as civic functions. तो अगर आपको लैंड एक्विजिशन करना है, आपको चाहे प्लानिंग करनी है, गार्बेज मैनेजमेंट करना है, पब्लिक हेल्थ है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो ये सब नोएडा करती है, ये अथॉरिटी करती है. नाउ अब इसमें क्या लूप होल है? लूप होल ये है कि आप दिल्ली की बात करो, ठीक है, आप मुंबई की बात करो, तो अनलाइक दोस पर्टिकुलर मेजर सिटीज, नोएडा डज नॉट हैव अ इलेक्टेड म्यूनिसिपल बॉडी.
ठीक है, DDA हुआ, आपका MCD हुआ, BMC हुआ, MMRDA हुआ, ठीक है. तो this is the challenge. Second, the Noida, it has also crossed the 1 million population mark in 2010, and this makes it it qualifies for the metropolitan tag under your constitutional amendment act of 92, that is the 74th constitutional amendment act. तो 10 लाख का आप क्रॉस कर चुके हो, ठीक है. Now, what is a metropolitan corporation? So basically, it is an area which is a city which has a population of more than 10 lakhs. Okay, so it is an elected urban body, a local body which is responsible for your, say, you can say, public health, sanitation, waste management, then your citizen services, amenities, etc. And these corporations, as we all know, they form the third tier of your governance. तो जैसे आपके पंचायत होते हैं, सिमिलरली वी हैव दीज. सो व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है. अब अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स की जगह देयर विल बी पीपल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स who will be directly responsible to the citizenry. Obviously this will lead to a more open and participatory type of governance. Local issues like you can say your disposal of the waste, garbage, street lighting, they can be addressed in much more faster manner, and it will also bridge the gap that is there between the citizens and the government, right? So this is the significance. So you can keep a tab on this as well. Now let's move to the next topic. So important from your prelims point of view is the third tier of governance. So ये interrelated आप linkage कर सकते हो कि questions अब municipal functioning पे question आ सकता है, elected mayors के ऊपर question आ सकता है. तो these kind of related topics you can prepare. Next is your Darali flash flood, that is the उत्तरकाशी डिज़ास्टर दैट रिसेंटली टुक प्लेस. तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 मंथ में कितने फ्लैश फ्लड्स के केसेस आए हैं फ्रॉम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ठीक है. लैंडस्लाइड्स के कितने केसेस आए. सो देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ डेथ्स अकरिंग, number of people have become homeless or they are stranded, ठीक है. And there is a lot of economic loss as well. So first of all, what are flash floods? So flash flood is nothing but a sudden surge of water in the river and the streams which often carries debris, ठीक है. तो अब इसका ट्रिगर क्या होता है? ऑब्वियसली अचानक से रेनफॉल आ गई, उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गया, मड स्लाइड हो गया और वो रिवर्स में ज़्यादा पानी हो गया. तो what are the reasons for this? So this is a complex thing, okay. We have to understand that it is a complex phenomenon and it has a number of trigger factors, ठीक है. तो पहला तो जैसे एक्सट्रीम रेनफॉल ही हो गया. सेकंड, ग्लेशियल आइस ब्रेक्स, ठीक है. ग्लेशियल आइस ब्रेक्स, so because of that there is sudden release of water. तो एक तो हो गया आपका एक्सट्रीम रेनफॉल. देन इवन मॉडरेट रेनफॉल कैन लीड टू दिस फ्लैश फ्लड्स जब आपका जो एरिया है दैट इज़ इकोनॉमिकली फ्रेजाइल, ठीक है. तो बिकॉज इफ़ योर स्लोप इज़ अनस्टेबल इन नेचर और इफ़ योर द सोयल दैट इज़ सैचुरेटेड इन नेचर, तो बिकॉज ऑफ दैट इवन मॉडरेट रेनफॉल कैन लीड टू दिस फ्लैश फ्लड्स. But it is also important to understand that not all kind of cloud burst they can lead to flash floods, ठीक है. Similarly, all floods, it is not essential that the reason for them is extreme rainfall, as I have told you. So multiple factors they have to converge. So the factors related to rainfall, factors related to the nature of the soil, factors related to slope, ठीक है, ग्लेशियर एक्टिविटी, डेब्री. सो ये सब मिल के दे combine to give these kind of disasters. So if I talk about cloud burst now, so what is the role of cloud burst? So पहले तो आपको समझ आना चाहिए what is the definition of cloud burst. So IMD says, according to IMD, so if the rain is more than 100 mm
ठीक है, अगर 100 mm से ज़्यादा है इन अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर इन एन एरिया ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट। नाउ अगर हम अभी धराली वाला डिजास्टर की बात करें, सो इन धराली इट वाज 32 mm। ठीक है, 32 mm इन 24 आवर्स। So obviously this is not a cloudburst. Are you getting my point? So this is not a cloudburst. So the point is that even events which are not cloudburst, they can lead to such kind of disasters. And the second thing, these kind of events, they can still trigger landslides अगर आपका hilly region है, because we are talking about Uttarkashi, Uttarakhand right now. So थोड़ी rainfall, it can also trigger landslides and flash floods if the area is a hilly area. ठीक है, now what are the other factors? अगर हम geographical factors की बात करें, so we are talking about Himalayan region. So these Himalayan region, they are young mountains. ठीक है, because of their young nature, it is a fragile kind of geology, you can say. So because of that, they are more prone to landslides. Second is the seismic activities, so earthquake. So these kind of activities, they increase the vulnerability of the region. Then human related factors like construction, deforestation, heavy traffic, so all these lead to more risk. And obviously in the saturated soil and the sloppy region, so these are some of the reasons. Now challenges. ठीक है, so अब बारिश को अगर हमने प्रेडिक्ट करना है, सो दैट इज पॉसिबल, बट जब फ्लैश फ्लड की बारी आती है, सो देयर इज अ एंगल ऑफ अनसर्टिनिटी देयर। ठीक है, सो वी आर मूविंग इन इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, द मॉडल्स एक्सेट्रा आर इम्प्रूविंग इन दिस नेचर, बट स्टिल ग्लेशियल ब्रीचेस or the debris flow or the landslide formation, these kind of phenomenon, they are difficult to put into a model. ठीक है, so what can be the mitigation measures you can mention? That you should avoid construction near to the river areas, and whichever the river banks which are vulnerable in nature, so we can relocate the villages or the infrastructure away from those regions. Then there should be a proper disposable of the boulders, जो आपका डेब्री होता है, boulders होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उनका प्रॉपर स्टोरेज एंड डिस्पोजेबल होना चाहिए. एंड देयर शुड बी कंटिन्यूड रिसर्च इनटू अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स, द मिटिगेशन मेजर्स दैट यू कैन mention. Next, so recently these rules came out, that is the environmental protection management of contaminated sites rules. So what are contaminated sites? So basically these are areas where the hazardous, the waste, they have been dumped, okay, which, and this leads to soil or the groundwater or the surface water contamination, and this will ultimately lead to risk to human health or the environment as well. So examples क्या हैं of these kind of areas? Like we have your landfills, ठीक है, आपका landfills हुआ, then we have your dump sites, chemical storage sites, spills, these sites, etc. So these are the contaminated sites, and there are 103 such sites, and only 7 are under remediation. ठीक है, तो अब what is the need for such rules? तो पहला तो यही पॉइंट हाईलाइट कर सकता है कि 103 such sites are there, and only 7 such sites have started remedial operations. Now then we can also talk about like how the responsible parties, ठीक है, they have shut operations or they lack resources for cleanup. ठीक है, this is the second one. Second, there is also the 2010 capacity building program, ठीक है, वो एक previous step जो उठाया गया था, then which provided for the inventory of the potential contaminated sites as well as the guidance for assessment and remediation.
So these kind of provisions were there, and they still remain unfulfilled till the current year, that is 2025. Now let's talk about what are the provisions. So first is the reporting and identification. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? So the district administration, it will prepare half yearly reports on the suspected contamination sites, and the SPCB, that is your State Pollution Control Board, or a related organization, it will conduct the prelim assessment within 90 days and a detailed survey within 3 months टू कन्फर्म दिस कंटेमिनेशन. तो पहले आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आया, फिर आपका SPCB आया, फिर उसके बाद केमिकल असेसमेंट होगा. सो दे विल डिटरमाइन द लेवल ऑफ द केमिकल्स एज पर द 2016 रूल्स. ठीक है, तो दोज रूल्स 2016 रूल्स, द hazardous and other waste rules, they are important. You should know the provisions of them. So the sites which exceed the safe levels, they will be publicized and they will be restricted for access. And then comes the remediation plan. So the remediation plan will be given by the reference organization. तो वो identify करेंगे कि who are the responsible party. तो 3 महीने के अंदर they will be identifying the responsible parties, and the entire cost will be borne by the polluters. ठीक है, और अगर नहीं है, सो देन द सेंटर और द स्टेट, इट विल कम इनटू द पिक्चर एंड दे विल हैंडल द क्लीन अप. द लीगल लायबिलिटी, सो जो भी लायबिलिटी होगी, क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर द कंटेमिनेशन फॉर कॉजिंग से लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, सो इट विल बी इन सिंक विद द भारतीय न्याय संहिता 2023. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कुछ साइट्स को एग्जाम्प्ट किया गया है. दीज आर द रेडियो एक्टिव वेस्ट, माइनिंग, मैरीन ऑयल पॉपुलेशन, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डंप साइट. सो दीज काइंड ऑफ, वाई दे हैव बीन एग्जाम्प्टेड, बिकॉज इनके लिए अलग से देर आर सेपरेट लेजिस्लेशंस. तो अब व्हाट आर द लिमिटेशंस? दैट देर इज नो फिक्स टाइमलाइन फॉर द रेमेडिएशन वंस द साइट इज आइडेंटिफाइड. तो एक ये लिमिटेशन है. एंड इट ऑल्सो अप्लाइज ओनली टू द केमिकल कंटेमिनेशन, नॉट अदर टाइप ऑफ hazardous forms, right? So such kind of limitations are there. Next, that is related to how SCST and other marginalized community scholarships can be expanded in India. तो अगर हम अभी बात करें करंट लिमिट्स की, तो एग्जिस्टिंग लिमिट इज़ 2.5 लाख रुपीज़ एनुअल पेरेंटल इनकम फॉर एलिजिबिलिटी. ठीक है, एंड व्हाट इज़ द प्रपोज्ड revision? So the Ministry of Tribal Affairs says that raise the limit to 4.5 lakhs, right? And the Social Justice Ministry says that the limits for SC, OBC and the denotified tribes, they should also be revised for post and pre-matric scholarships, right? So this is the one related to income limits. Second eligibility criteria is the nationality, that is Indian. If I talk about the education status stage, so one is the pre-matric stage. So under that we have class 9th, class 10th for SCs, and class 1st to 10th if the parent or the guardian is in an unclean occupation. And if I talk about the post-matric, so that is after class 10th, so all those higher secondary college professional courses, all those are included. Okay. Now if I talk about the coverage and funding, तो it is a centrally sponsored scheme, तो funded 60-40 होगा आपका, यूनियन 60-40 states, and if I talk about नॉर्थ ईस्ट तो 90-10 है. ठीक है, तो if I talk about the budget allocation, ठीक है, budget allocation, so social justice ministry, so that is almost 66% of the total budget, and the tribal affairs ministry, that is dealing with STA scholarships, that is almost 18% of the total budget. Okay, so if the number of beneficiaries, so that is declining, so beneficiaries are declining. You can say if I talk about the SC, right, in the pre-matric case, so the number of beneficiaries has been declined almost by 30%. And if I talk about post-matric, so a 4% decline has been seen.
this is related to OBCs. If I talk about OBC, EBC and DNT, so there the decline has been almost 50%. So 58 lakh से आप 20 lakhs पे आ गए हो, and ST scholarships में a drop of around 5 lakh has been seen, ठीक है, in both pre-matric and post-matric. So what is the reason for this? What is the reason for the decline? So the only reason is that the income, ठीक है, जो आपका income threshold है, that is low, and that is preventing the deserving students from accessing the scholarships. So this is the rationale that is being provided. So if I talk about what are the recommendations by the parliamentary committee, तो उन्होंने ये बोला कि for the OBCs there should be a suitable rise in the income limit, and also the pre-matric scholarship, it should be extended from class 5th onwards, और for SC/STs आप सिर्फ income limit को बढ़ाइए, ठीक है. So this is the summary. So please keep a tab on this. Also the constitutional provisions related to SC/STs, you should have a knowledge about them. Next, the US designation of the Balochistan Liberation Army, that is BLA, as a foreign terrorist organization. So what is this FTO? So what is this FTO? So basically there is a Immigration and Nationality Act of 2009, this US. So this particular tagging is done under this act. So what are the consequences for the organization? Basically it criminalizes various kinds of support, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, लॉजिस्टिक हो, आपका इंटेलिजेंस हो. इट ऑल्सो फ्रीजेज द US बेस्ड एसेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. इट इम्पोजेस ट्रैवल बैन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, एंड यू कैन ऑल्सो नॉट एक्सेस द US फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है. तो ऑब्वियसली अगर US ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया है, सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ ग्लोबल आइसोलेशन ऑल्सो ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है, कि अगर US ने ही बोल दिया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बाकी कंट्रीज़ भी उसे टेररिस्ट एंटिटी की तरह देखने लगती हैं. सो BLA इज़ बेसिकली दिस आर्मी, यू कैन से इट वाज फॉर्म्ड इन 2005, ठीक है. सो दे वांट अ सेपरेट बलोचिस्तान, ठीक है. तो बलोचिस्तान विच इज़ फेमस फॉर द गोल्ड, गैस, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है. तो उससे उसकी आर्मी है BLA, एंड दे हैव कंडक्टेड वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक सुसाइड बॉम्बिंग्स, हाईजैकिंग एक्सेट्रा दैट हैज़ बीन कंडक्टेड. तो अब इससे क्या होगा? What is the significance of this US action? So basically it reinforces the global isolation of this group, and it curtails its capacity, obviously. And the important point here is the strategic timing, ठीक है. strategic timing, this is very important कि US और पाकिस्तान, they are engaging themselves in trade, security, ठीक है. तो ऐसे में दोनों का, US का इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना, right? So what does it show? That US firms, maybe they are more interested in this oil, gas, copper, gold which is available in this region, ठीक है. सेकेंड, दैट इज़ द इंडिया एंगल. अब इंडिया एंगल में क्या है कि आपने देखा होगा ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन सिंदूर हाउ दिस बलोची पीपल दे सपोर्टेड इन द इंडियन कॉज, ठीक है. तो अब ऐसे में पाकिस्तान में इट इज़ यू कैन से सिंबॉलिक एक्टिविटी है कि जो ये BLA है, इट इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया, ठीक है, कि एक न्यू दिल्ली लेड ऑर्गेनाइजेशन है. सो उस एंगल से भी देखा जाए, सो दैट इट इज़ अ विन फॉर पाकिस्तान. अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोलें तो इंडिया हैज़ ऑलवेज डिनाइड सपोर्टिंग दिस सेपरेटिस्ट, ठीक है, जो कि पाकिस्तान बार बार बोलता रहता है. एंड इफ़ यू नो दैट लास्ट मंथ, if you remember, the US designated TRF, the Pakistan-based proxy of Lashkar-e-Taiba, which was responsible for the terror attacks in this Pahalgam. So it designated that organization as well as terrorist organization, and India welcomed that. ठीक है. तो basically if it is
ऑब्वियसली अगर यूएस ने इसको एक पॉजिटिव मैनर में किया है सो दैट इज़ अ वेलकम स्टेप, बट अगर उनका इकोनॉमिक एंगल है या फिर इंडिया को साइडलाइन करना उनका ऑब्जेक्टिव है, सो दैट हैज़ कंसर्न्स फॉर इंडिया ऑब्वियसली. Now, US may shut down OCO satellites. So, what are these OCO satellites? So, OCO is orbiting carbon observatories. So, these satellites, these are remote sensing satellites which measure the atmospheric CO2 level. ठीक है, तो उससे क्या होता है? We try to understand the climate change. So, there have been 3 missions. That is the OCO-1, which was in 2009, and it failed. Okay, so there were certain concerns and this particular mission failed. OCO2 in 2014 and OCO3 in 2019. So this is installed in the ISS. Okay, and now what are the capabilities? So they can monitor CO2, crop in ecosystem monitoring. Then they also have revealed that these taiga forest, that is the boreal forest, they are significant CO2 absorbers, not only in the tropical rainforest but these kind of forests are also CO2 absorbers. And they also showed that natural carbon sinks, they can become sources under stress. तो अगर स्ट्रेस फैक्टर्स हैं लाइक वी हैव ड्राउट, वी हैव डिफॉरेस्टेशन, तो दीज कैन एक्ट एज सिंक्स, दीज सिंक्स कैन बिकम सोर्सेज. ठीक है, so basically now US has said that we will shut them down. So how will it affect? So we will not have now important high resolution accurate CO2 data. ठीक है, the ground based instruments that we are having, they cannot provide a complete planetary coverage, so we will be suffering from that side also. So it will also impact our strategies related to climate research, emission reduction, etc. So these are some of the factors that you should be knowing. Then India's agricultural exports versus the overall merchandise exports. So if I talk about the overall merchandise exports, so for the year 2024-25 they amounted to almost $437.4 billion, so a growth of 0.1% from the earlier financial year. And if I talk about the first quarter of this financial year, so they were around $112 billion, so that is an increase of around 1%. So we can say on the basis of these two factors that growth, it remains flat, growth is flat. ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है. वी आर एट दिस मोमेंट डिस्कसिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स. ठीक है, अगर अब हम बात करें एग्रीकल्चरल, सो दिस इज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स. अगर अब मैं बात करूँ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की, ठीक है, तो यहाँ पर 2024-25 में $51.9 बिलियन था, अ ग्रोथ ऑफ 6.4%. और क्वार्टर 1 की बात करें तो अ ग्रोथ ऑफ 5.8%. सो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग दैट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, दे आर शोइंग अ पॉजिटिव साइन, दे आर इंक्रीजिंग, जबकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दे आर फ्लैट. अब इसका क्या रीज़न्स है? इसका रीज़न है ऑल दोज ग्लोबल फैक्टर्स लाइक ग्लोबल ट्रेड टेंशन हुआ, आपका यूएस टैरिफ्स हुआ. इसका क्या रीज़न है? द रीजन्स फॉर दिस आर मानसून. द मानसून वाज गुड, देन देयर वाज रिलैक्सेशन ऑन द एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, देन commodity demand एट द ग्लोबल लेवल, सो दैट इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स. सो हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है, दे आर शोइंग अ पॉजिटिव साइन. सो अब अगर हम बात करें इंपोर्ट्स की एंड ट्रेड बैलेंस की, तो इंडिया रिमेन्स अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो एक्सपोर्ट्स अभी मैंने बताया था 51.9 बिलियन है, इंपोर्ट्स आर 38.5 बिलियन. ठीक है, इन डॉलर टर्म्स. सो बेसिकली वी आर हैविंग अ ट्रेड सरप्लस, दो इन 2013-14 वी हैड अ ट्रेड सरप्लस ऑफ ऑलमोस्ट 27 बिलियंस. ठीक है, अब वो आधा हो गया, 13 बिलियन रह गया. सो व्हाट आर द मेजर इंपोर्ट्स दैट वी डू? सो मेजर इंपोर्ट्स इंक्लूड द वेजिटेबल ऑयल्स, पल्सेस, कॉटन, रबर एक्सेट्रा.
ठीक है. So what are the key takeaways? So to summarize, one, the agricultural exports, they are outpacing our merchandise exports. ठीक है. Second, policy measures, good monsoon, global price dynamics, they all are crucial to sustain the farm export growth. ठीक है. Third point that is important is that the future growth that will depend on external factors like we have seen the US tariff, the global crop production, etc. Right. US cuts on mRNA vaccine research. So what is this mRNA vaccine? So mRNA, that is your mitochondrial RNA. So this particular vaccine, it instructs the body to produce a fragment of virus which will trigger immune response. ठीक है. तो अब इसकी क्या एडवांटेज होती हैं? सो रैपिड डेवलपमेंट, तो ये आसानी से आप डिज़ाइन कर सकते हो विद इन फ्यू मंथ्स. अडेप्टिबिलिटी, एंड इट कैन ईजली बी मॉडिफाइड टू टारगेट न्यू. अगर आपके वायरस में म्यूटेशंस हो रही हैं, जैसे कोविड है, तो ये कोविड के टाइम में बहुत यूज़ हुआ था. ठीक है. तो आपके जो भी इम्पोर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, तो उसमें भी इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपका डेंगू हुआ, एड्स हुआ, कैंसर हुए, स्किन कैंसर, कोलन कैंसर. सो दैट दिस पर्टिकुलर रिसर्च कैन बी is useful for those kind of diseases as well. Now what has happened recently is that US, they have cancelled the grants that the government provided for this mRNA research. ठीक है. तो ऑब्वियसली जो भी अब ये चल रहा था, इनोवेशन चल रहा था इन डिफरेंट डिजीज़ के लिए, सो दैट विल गेट अफेक्टेड. So important here is this particular word, that is mRNA. So what is RNA, what is mRNA, what is DNA, how they are different? So these kind of details you should know. Now last, so I have put this in a question format. So it says the examine the objectives and the benefits of IMAC. How has the Israeli-Gaza conflict impacted its implementation, and what measures can India adopt to address these challenges? So let's discuss the topic now first. What is IMAC? So this was basically announced during the G20 summit of 2023, which was held in New Delhi. So basically the objective is that we should stimulate economic development, connectivity, trade between India and Europe थ्रू द अरेबियन गल्फ. तो यहाँ पर दो लेग्स होंगी. वन वुड बी इंडिया एंड द गल्फ, दैट इज़ कंटेनर ट्रैफिक दैट विल गो फ्रॉम इंडियाज़ वेस्टर्न पोर्ट्स टू यूएई. ठीक है. यूएई से आपका ट्रेन्स होंगी, जो हाई स्पीड ट्रेन्स होंगी, उसके थ्रू जाएगा सऊदी अरेबिया और जॉर्डन टू इज़राइल्स हाइफा पोर्ट. ठीक है. तो अब इज़राइल, फिर देन वी विल कनेक्ट to Europe. So how we will do that? So the cargo then will be shipped from Haifa port to say ports in Italy, ports in Greece, और फिर यूरोप में थ्रू द रेल नेटवर्क द गुड्स विल बी डिक्लेयर्ड कंट्री वाइड, सो द कॉन्टिनेंट वाइड. So what is the benefit here? So under this we are reducing the shipping time by 40%. ठीक है. तो अगर हम रेड सी का करें कंपेरिजन, तो 40% डिडक्शन इज सीन. ऑल्सो इट विल इम्प्रूव द डिजिटल कनेक्टिविटी, द energy connectivity or the hydrogen, new types of energy such as the hydrogen connectivity, and ultimately lead to more jobs. ठीक है. improve trade efficiency, lower the GHGs emissions etc. तो वो चीज़ है. अब जब हमने 2023 में इसकी बात की थी, तो ये तो आपका हो गया व्हाट इज़ आईमैक, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स. अब जब हमने 2023 में इसको लेके आए थे, सो दैट वाज अ फिजिबल पीरियड. तब ये बहुत फिजिबल था ये आइडिया. क्यों? क्योंकि इट वाज पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट. ठीक है. रेयर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट. ठीक है. सेकेंड, स्ट्रॉन्ग ट्रेड इंसेंटिव्स. ठीक है. तो आपका यूरोपियन यूनियन हुआ, दैट वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया.
ठीक है. UAE and Saudi Arabia also, they were indulging in non-oil trade with India, which was increasing at a steady rate during that period. ठीक है. तो it was this particular concept, this corridor, it was conceptualized to overcome trade barriers like tariff gaps हुए, या फिर आपका लो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हुआ, इंश्योरेंस इशू हुआ, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, रेल नेटवर्क हुआ. तो उन सब को ओवरकम करने के लिए दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट वॉज डिज़ाइन इन दिस ईयर. अब हुआ जो अब पीरियड हुआ 2023 के बाद गाज़ा वॉर हुआ, तो नाउ दैट हैज़ थ्रेटन्ड आईमैक. हाउ? तो इज़राइल की जो ये वॉर है गाज़ा के साथ, इज़राइल गाज़ा कन्फ्लिक्ट, सो इट हैज़ ऑलमोस्ट किल्ड 60,000 पीपल. ठीक है. एंड दिस हैज़ लीड टू डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द रीजन. ठीक है. तो देन देयर इज दिस जॉर्डन Israel tiles. So they have also weakened, and that becomes a very important leg of this IMAC, मिडल ईस्ट और यूरोप को जो कनेक्ट करता है. ठीक है. फिर आपका सऊदी इजरायली रिलेशंस हुआ. ठीक है. तो ये सब जो चैलेंजेस हैं, बिकॉज ऑफ दैट दिस IMAC इज नाउ अ क्वेश्चन मार्क. अब IMAC के क्या कॉन्सिक्वेंसेज आप बोल सकते हो दैट यू कैन मेंशन. फर्स्ट इज हायर इंश्योरेंस प्रीमियम वुड बी रिक्वायर्ड. देयर वुड बी इंक्रीज्ड पॉलिटिकल रिस्क, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आएगी, इम्प्लीमेंटेशन में देरी होगी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स इट विल गेट अफेक्टेड. फिर इसका क्या नतीजा हुआ कि 2023 के बाद कोई मीटिंग ही नहीं हुई. ठीक है. सो व्हाट आर द करंट प्रोस्पेक्ट्स, यू कैन से दैट जो अपना इधर वाला लैग है, दैट इज द ईस्टर्न लैग बिटवीन इंडिया एंड गल्फ, so that is still viable because we have strong relations, India UAE, India Saudi Arabia, whereas the western leg, that is uncertain because of this Middle East instability. ठीक है. So near term implementation is, you can say it is limited to trade facilitation and digital connectivity, this you can mention, whereas the long term success of IMAC, it will depend upon the resolution of this conflict, restoration of the stability in the Middle East region, as well as the regional cooperation on infrastructure and trade protocols. So that you can mention in the way forward, right? So this is what I wanted to discuss in this present video. So in the next video we will be taking current affairs from your week 3. Thank you.